Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we will see 70 literary theories MCQs which were asked in the SET examination and the NET examination. So this is a set of multiple choice questions, that is major figures, important minor contributors in the post-World War theories, and suitable for the NET, SET and GATE examination. So let's see with the first question. Welcome again on my channel. If you are new on Bright Learners Academy, then like, share and subscribe this session and don't forget to hit the bell icon. Now the next question or the first question we will start. Which of the following literary theories emerged primarily as a response to the Saussurean or Ferdinand de Saussure's linguistic? New criticism, Marxist criticism, structuralism. So the correct option is here. Structuralism. Option number 3 is correct here. Next we will see the question number 2. So structuralism, particularly it is early phase that figures like the Levi-Strauss and the Barthes heavily drew upon the Ferdinand de Saussure theories of language as a system of science. Now, next question. The concept of deference is central to the work of which post-structuralist thinker? So options are here. Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Julia Kristeva. So the correct option is that Jacques Derrida. Option number 2 is correct here. So the option number, this one is correct here. Next, see, deference is a neologism coined by the Derrida. It's a combination of the meaning to the differ and to defer. So highlighting the endless place of the meaning in language. So defer and the differ. That is deference. Next question. Who among the following is most associated with the theory of the death of the author, books, and that is what among the following is most associated? डेथ ऑफ द ऑथर के साथ कौन है? तो रोलैंड बार्थस का फेमस वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं. रोलैंड बार्थस का ऐसे है ये, द डेथ ऑफ द ऑथर आर्ग्यू करता है दैट ऑथर्स इंटेंशन or the biological details should not be matter. It's the factor in the interpretation of text is important. Next question. Which critical approach focus on the inherent ambiguities and the paradoxes within a literary text, often without reference to the external context? So कौन सा एक क्रिटिकल अप्रोच है जो फोकस करता है इनहेरेंट एम्बिग्यूटीज एंड द पैराडॉक्सेस विद इन द लिटरेरी टेक्स्ट? तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, deconstruction, new criticism and cultural study. So the correct option is new criticism. New criticism prominently in the 20th century, it means that post World War II emphasize करता है close reading of the text itself, not the biography of the author and all. Looking for is the internal coherence, ironies, paradoxes. text में क्या है? Reject the external factor like the author का intention, उसके perspective. जो text में दिया है उस पे ज्यादा emphasize करता है. Next question. The concept of discourse as a system of power knowledge is central to the work of history. Louis Althusser, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Homi के बाबा. So the correct option is that Michel Foucault. Discourse की बात Michel Foucault करते हैं. Okay. Discourse in the novel. So the Michel Foucault extensively explored how the discourses shape our understanding of the world and how the knowledge, power, that exercising a power through the specific historical formation, all these are talked by the Michel Foucault. Next.
Which feminist critic introduced the concept of gynocriticism? So the Helen Sixes, Lucy Irigaray, Ellen Showalter, Judith Butler. So the correct option is that Ellen Showalter. Gynocriticism का concept जो दिया है एलन शोवॉल्टर यांनी गायनोक्रिटिसिझमचा ऑप्शन दिलेला आहे. सो एलन शोवॉल्टर जे आहेत ते की फिगर आहेत फेमिनिस्ट लिटररी क्रिटिसिज्मच्या एंड शी क्वाइन द गायनोक्रिटिसिज्म. उन्होंने गायनोक्रिटिसिज्म को क्वाइन किया है एंड शी डिस्क्राइब अ न्यू फेज ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म फोकस ऑन द स्टडी ऑफ वीमेन एज अ राइटर एंड द फीमेल लिटररी ट्रेडिशन. Question number 7. The idea of the imagined community is a significant concept in. तो ये concept किसमें है? Post colonialism, psychoanalytic criticism, narratology, and one more option is that eco-criticism. So the 4 options are given here. We have to select one. तो इमेजिन कम्युनिटी जो है इट्स सिग्निफिकेंट फोकस करता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे while preliminary associated with the Benedict Anderson's work nationalism the concept of imagined communities. Next question. Which theorist is known for their work as the interpellation and ideological state apparatus? ISAS. तो कौन से theorist है जो जाने जाते हैं उनके इंटरपेलेशन एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अपैरेटस? एंटोनियो ग्राम्सी, लुइस अल्थज़र, रेमंड विलियम्स और स्टुअर्ट हॉल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट हियर लुइस अल्थज़र. सो लुइस अल्थज़र एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था इंटरपेलिएशन, हाउ इंडिविजुअल आर हेल्ड इनटू द सब्जेक्ट पोजीशन बाय द आइडियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The anxiety of influence is a concept developed by. तर anxiety of influence ही concept कोणाची आहे? हेरॉल्ड ब्लूम, नॉर्थरॉप फ्राय, फ्रँक क्रेमोर और स्टॅनली फिश. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दॅट हेरॉल्ड ब्लूम. anxiety of influence या कॉन्सेप्टला डेव्हलप केलेला आहे हेरॉल्ड ब्लूम यांनी. हेरॉल्ड ब्लूम थेअरी ऑफ द अँझायटी ऑफ इन्फ्लुएन्स. त्यांच्या हेरॉल्ड ब्लूम हे त्यांच्या अँझायटी ऑफ इन्फ्लुएन्स याच्यामध्ये सजेस्ट करतात पोएट स्ट्रगल दॅट मिसरीड लिटररी प्रेडिसर्स क्रिएट द स्पेस फॉर देअर ओन ओरिजिनॅलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्रिटिकल अप्रोच एनालाइज द सोशल अँड कल्चरल इफेक्ट ऑफ लिटररी टेक्स्ट ऑन रीडर्स? बघा विच क्रिटिकल आपण बघू शकता. विच क्रिटिकल अप्रोच अनालाइज सोशल अँड कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ द लिटररी टेक्स्ट ऑन द रीडर. So it's a reader response theory. Reader response theory itself talk about the connection between the reader and the book. So the correct option is here reader response criticism. Reader response criticism shift the focus from the author to the text to the reader's role, creating that the author's role is important. Key figures include the Stanley Fish and Wolfgang Escher. ये मेन माने जाते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, स्टैनली फिश एंड वुल्फगैंग एशर. नेक्स्ट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक इज द बेस्ट नोन फॉर. तो गायत्री स्पिवक चक्रवर्ती का फेमस वर्क है डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म. क्वेयर थ्योरी नहीं, कॉग्निटिव पोएटिक्स भी नहीं, इको क्रिटिसिज्म भी नहीं. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक और द गायत्री स्पिवक, शी इज प्रोमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट है. उनका और एक उन्होंने जैक्स डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी ट्रांसलेट भी किया है और उनका एक ऐसे फेमस है कैन द सबल्टन स्पीक, बिकॉज इन द लास्ट वीक व्हेन आई वाज टीचिंग द सबल्टन मूवमेंट टू द स्टूडेंट इन कॉलेज, दैट टाइम I realized that how she wrote about the subaltern and she asked the question, raised the question, can the subaltern speak? Who are the subaltern people? Next question is that the concept of archetypes of the collective unconscious is central the literary theory influenced by.
the concept of archives or the archetypes and the collective unconscious, ये जो है is central to the literary theory influenced by. तो किसकी theory है? कार्ल यूंग्स की. Very correct. Second option is right here. Next. So, Johnian literary criticism applies the Carl Jung theories of archetypes, universal pattern of thought and imaginary, and the collective unconscious to analyze the literary work. Next question, which of the following theorists is associated with the idea of cultural materialism? Stephen Greenblatt, Catherine Beazley, Raymond Williams, Louis Monstro. So the correct option is Raymond Williams. जब जब हम कल्चरल स्टडी को पढ़ते हैं, जब जब कल्चरल स्टडी की बात होती है, कल्चरल मटेरियलिज्म आता है. सो कल्चरल मटेरियलिज्म ये जो है किससे एसोसिएटेड है? रेमंड विलियम से. रेमंड विलियम एक की फिगर मानी जाती है ब्रिटिश कल्चरल स्टडी में, डेवलप द कल्चरल मटेरियलिज्म. एक कल्चरल सेंटर भी है जिस पे एक क्वेश्चन भी आया है, CCS, उसका फुल फॉर्म क्या है? और बर्मिंघम स्कूल एंड उसका जो एक मेन सेंटर है कल्चरल स्टडी का, उसका लॉन्ग फॉर्म हमेशा पूछा जाता है. इफ यू नो अबाउट द कल्चरल स्टडी एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सो यू कैन फाइंड द लिंक बिलो in the description about the cultural study and its question, जिसमें मैंने रेमंड विलियम्स को डिटेल में पढ़ाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टर्म इरिक्वेयर फेमिनाइन. So, Iroquois feminine women's writing is the most closely associated with feminist theories. Simone de Beauvoir, Helen Sixtus, Kate Millett, Judith Butler. So, women's writing or that Eritrean feminine is related with the Helen Sixtus. Helen Sixtus French feminist है वो, जिन्होंने एरिक्वेयर फेमिनिज्म की बात की है. ऑफ द राइटिंग शी चैलेंज द पेट्रियार्कियल सोसाइटी, पेट्रियार्कियल लैंग्वेज है ना, एक्सप्रेस द फीमेल एक्सपीरियंस, नॉन लीनियर सबवर्जिव लाइक द बुक्स शी रोट. Next, which of these approaches would analyze a literary text in relation to the social, political and economic power structure of its historical period? So, which of these approaches? So, formalism, new historicism, stylistics, cognitive poetics, which one is correct? तो यहाँ पे करेक्ट है न्यू क्रिटिसिज्म. सो न्यू क्रिटिसिज्म एनालाइज करता है लिटरेरी टेक्स्ट इन रिलेशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर. New historicism developed by the figures like the Stephen Greenblatt. जब हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं, so we should keep in mind the Stephen Greenblatt. Stephen Greenblatt, न्यू हिस्टोरिसिज्म. कल्चरल मटेरियलिज्म, रेमंड विलियम्स. इस तरह से आपको याद ही करना पड़ेगा. Literary text as embedded and the inseparable from their historical and cultural context, often reading them alongside non-literary document. Question number 16 on the screen. The concept of the postmodern condition as a crisis of grand narrative was articulated by. The concept of postmodern condition as a crisis of grand narratives was articulated by the Jean-Francois Lyotard. Option number 1 is correct. Jean-Francois Lyotard is the influential work The Postmodern Condition. Characterize करता है postmodernity as an incredible towards the meta narratives or the grand narratives or the programs and enlightenment. I hope that you understood whatever the questions I am reading. As an English literature student, we must know the each and every question in English itself without translation. But in between, which is necessary to learn, I translate as we accept it as a translation method for the teaching. So next question, which literary theory often examine the representation of nature and environment in text? कौन सी literary theory है जो examine करती है representation nature and the environment in the text? Psychoanalytic criticism no, eco-criticism, क्योंकि जहाँ पे economics जहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज और द बुक्स और उसके नेचर की बात हो रही है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू इको क्रिटिसिज्म. इको क्रिटिसिज्म एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पे लिटरेचर और
environment के एक kind of a relationship between both, and the physical environment often analyze the environmental themes and the portrayal of the nature. Next question, the theory of subaltern studies is closely associated with which field of the literary cultural theory? तो सबल्टन स्टडी क्लोजली एसोसिएटेड करता है क्वेर थ्योरी से, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से, पोस्ट कॉलोनियलिज्म से, फेमिनिस्ट थ्योरी. सो द करेक्ट ऑप्शन, सबल्टन स्टडीज को हम पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म में. Next, a subaltern study is the originating in South Asia, focus on the history and the agency of marginalized group जो subaltern people है, who were excluded from the dominant historical narratives, जिन्हें purposefully एक है ना historical narratives में हटाया गया है. तो इसमें मेन फिगर है रंजीत गुहा, पार्थ चैटर्जी, even the Gayatri Spivak. When we studied the subaltern literature or the subaltern movement, we should learn the Ranjit Guha and the name of the book of the Ranjit Guha, what is the actual theory of the Guha is. Next question, question number 19. Who is known for their work for the Orientalism? Orientalism, it is a discourse that construct the Orient in the Western imagination. So होमी के बाबा नो, होमी के बाबा बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, उनकी नेशन एंड नरेशन फेमस है. Edward Said is related with the Orientalism because Franz Fanon is not related with Chinua Achebe, the African literature writer or the African writer. So the correct option हमारा B हो जाएगा, Edward Said. Edward Said का seminal work भी है Orientalism. Orientalism पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसका ईयर पूछा गया है तो 1978. Orientalism, Edward Said, 1978 is the correct option. Next question. The concept of the male gaze is the key term in which literary theory? Queer theory, feminist film theory, psychoanalytic criticism, structuralism. So the correct is that feminist film theory, which is the male gaze. So while the originating in the film theory and the film industry, Laura Mulvey, इनका essay visual pleasure and the narrative cinema. Laura Mulvey बहुत ही famous है, इसे पढ़ना जरूरी है. इस पे नेट में प्रीवियसली क्वेश्चन आया था. तो उनका एक ऐसे है, विजुअल प्लेजर एंड द नरेटिव सिनेमा, द मेल गेज. दैट कॉन्सेप्ट हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एनालाइज करती है वो हाउ वीमेन आर रिप्रेजेंटेड फॉर फ्रॉम द मस्कुलाइन ऑफन ऑब्जेक्टिफाइंग व्यू पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकेल बक्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉजिज्म और डायलॉगिज्म, कार्निवल, देखो डायलॉजिज्म, कार्निवल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस विच एरिया, और क्रोनोटॉप की बात भी करते हैं मिकेल बक्टेन, डिस्कोर्स की बात करते हैं मिकेल बक्टेन, हेट्रोग्लोसिया की बात करते हैं मिकेल बक्टेन. हेट्रोग्लोसिया, क्रोनोटॉप, कार्निवल स्क्यू, डायलॉजिज्म, ऑल दीज आर रिलेटेड विद द मिकेल बक्टेन एंड डिस्कोर्स जो है मिशेल फूको का. ऑल दिस वी शुड लर्न. So the formalizer, reader response criticism, cultural studies, psychoanalytic criticism. So the correct option is cultural studies. Bakhtein's idea of dialogism or the interplay of the multiple choice in the text and the carnival, subversive popular culture has been highly influenced in the cultural studies, particularly in examining how different social voices and forms interact with the text. Next question, which theory is known for his explanation of the mirror stage? Mirror stage से कौन related है? That is develop human subject crucial for the psychoanalytical theory. Sigmund Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, Julia Kristeva, the correct option is Jacques Lacan. मिरर स्टेज की बात करते हैं या थेरीज जाने जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए जैक्स लकान. फ्रेंच फिलोसोफर है, फ्रेंच साइको एनालिटिक फिलोसोफर है. री इंटरप्रिटेड द फ्रॉस्ट थ्योरी को इन्होंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को इन्होंने री इंटरप्रेट किया है. उनका कॉन्सेप्ट है उसमें मिरर स्टेज, जो डिस्क्राइब करता है क्रूशियल मोमेंट इन इन्फेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. And the last question of the session is that the notion of hybridity and the mimicry are key concept in the work of Gayatri Spivak, Edward Said, होमी के बाबा. As we told that hybridity जो concept है ये mimicry ये आता है हमारे होमी के बाबा के साथ.
Okay, Homi K. Bhabha is a leading figure who extensively discuss about the hybridity, blending culture. जैसे है ना, हम इंडियंस है तो हम पिज्जा भी खा रहे हैं, वड़ा पाव भी खा रहे हैं, तो हमारा कल्चर मिक्स हो गया ना, हम ओरिजिनली इंडियन रहे ना हम पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए. लाइक दैट दिस इज द hybridity theory. In detail I will definitely teach you the Homi Bhabha's hybridity theory, and the after there is a kind of a one more concept is given by him, ambivalence. So all these we will discuss. So this is how the today's session. Remaining questions, because there are total 70 questions I given to you people, which is very very important on the literary criticism. In between, in this session, in the part 1 we will see only the 25 questions. Remaining questions definitely we will see in the next part 2 in the upcoming session. If you are new on my channel, don't forget to like, share and subscribe.